Hello students, good evening, welcome to today's session with Learn Fatafat. So in today's session, life processes, this chapter we will be continuing, जो है chapter number 6 for grade 10 science. So in life processes, आज का जो topic है, आज हम कौन सा life process पढ़ेंगे? So we will be doing a very important life process today. बहुत ही इम्पोर्टेंट कौन सा है वो एक्चुअली लाइफ प्रोसेसेस तो सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं इसलिए उनका नाम ही है लाइफ प्रोसेसेस बिकॉज दे आर द प्रोसेसेस व्हिच हेल्प अस टू लिव अ लाइफ इजंट इट तो आज का जो लाइफ प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी रेस्पिरेशन बिफोर दिस वी हैव डन न्यूट्रिशन ओके तो आपको इस चैप्टर में 4 मेन लाइफ प्रोसेसेस कवर करने हैं न्यूट्रिशन respiration, transportation and excretion. So nutrition one we have done and today we will be beginning respiration. So let's learn fatafat. Hi Ronak, how are you doing? Okay, so यहाँ पे देखो पहला टॉपिक वाटर लाइफ प्रोसेसेस था इंट्रोडक्शन थी आफ्टर दैट इन न्यूट्रिशन हमने प्लांट न्यूट्रिशन में ऑटोट्रोफिक में फोटोसिंथेसिस पढ़ा heterotrophic nutrition भी देखा and that we also saw nutrition in human being where we have seen the whole digestive system और food खाना खाया food which is a main source of energy तो वो food break down because the food which we consume is in a complex form वो break down हो गया अब एकदम simple बन गया है ठीक है तो अब हम देखते हैं ये फिफ्थ टॉपिक स्टार्ट करेंगे respiration so if you remember nutrition in human beings वहां पे sorry in that what was the main thing in digestion good okay digestion में क्या हुआ था digestion में और absorption में एनर्जी जो हमारी बॉडी को चाहिए फॉर द वेरियस एक्टिविटीज एनर्जी कहाँ से मिलेगी फूड से फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सो दिस फूड was broken down into the simpler substances है ना सिंपल सब्सटेंसेस तो बन गए इसके जब हमने डाइजेशन और डाइजेशन में तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो सिंपल बन गया दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन ये सब सिंपल फॉर्म में बन गए एंड देन जब इनकी एब्जॉर्प्शन हुई सो दे वर आल्सो एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड लेकिन अब हमने खाना क्यों खाया था क्या चाहिए था हमको when we are tired when we have done a lot of things अगर आप बहुत बाहर से खेल के आए हो then you get hungry because you need energy खत्म हो जाती है ना so food is what it is a source of energy लेकिन अभी तक यहाँ पे एनर्जी कहाँ मिली हमें एनर्जी अब तक मिली नहीं है so ये जो सिंपल सब्सटेंसेस है जो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट शुगर जो बनने वाला है ग्लूकोज उससे एनर्जी कैसे मिलेगी दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन ठीक है रेस्पिरेशन में क्या होगा जो ग्लूकोज है दैट विल combine with the oxygen or you can call it as oxidation of glucose or breakdown of glucose to release energy यानी इसके साथ ऑब्वियसली दूसरे भी प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन ओके अल्टीमेटली एनर्जी हमारी बॉडी को कब मिलेगी जब ये प्रोसेस होगा अब ये प्रोसेस जो रेस्पिरेशन है क्या है ये कैसे होगा where will it happen and how will it happen and are there any types of respiration yes so all this you will learn today ठीक है तो let's continue and see here तो here we can see a cell of the body ठीक है all living organisms are made up of cells respiration जो है respiration is a cellular process ठीक है which means कि ये बॉडी में कहाँ पे होता है दिस हैपेंस इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी एवरी सेल ऑफ द बॉडी सो अगर हम एक सेल कंसिडर करें दैट्स व्हाई वी हैव शोन अ सेल हियर तो इन एवरी सेल ये जो ग्लूकोज था दिस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ओके
कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों जगहों पर ये कन्वर्जन होगा इन स्टेप्स दैट वी विल स्टडी। जो पहला स्टेप है वो साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम एरोबिक एनारोबिक देखेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन। तो यहाँ पे अभी आप इतना समझ लो कि सेल में, in every cell glucose will be converted to the energy। कैसे? ऑक्सीजन भी यूज करेगा सेल, और फूड से हमें ग्लूकोज मिल गया, ऑक्सीजन हमें मिल जाएगा एयर से जो हम ब्रीथ इन करते हैं, ठीक है। सो दैट विल कंबाइन विद द ग्लूकोज और उसको ऑक्सीडाइज कर देगा टू रिलीज एनर्जी अलोंग विद अदर प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। So here what happens is glucose, which is a 6 carbon molecule, you know, क्योंकि glucose is C6H12O6, ये break down हो जाएगा to form pyruvate, which is a 3 carbon molecule, थर्ड नहीं, हाँ, 3 carbon molecule। ये वाला जो स्टेप है ये होगा साइटोप्लाज्म में, ओके, breaking down of glucose, which is known as glycolysis। So breaking down of glucose will happen in the cytoplasm of the cell, जहाँ पे ये 6 molecule glucose will break down into a 3 carbon molecule pyruvate। ये फर्स्ट स्टेप है ए, ठीक है। आगे इसके और भी स्टेप है, वो भी देखेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग सम एनर्जी। Siam tech, yes please, what please, you have written only please। So जैसे मैंने बताया था रेस्पिरेशन के टाइप्स होते हैं। व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? वो डिपेंड होगा ऑन द नीड ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन में हमेशा ऑक्सीजन इज नीडेड, और इट कैन हैपन विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो। इफ यू थिंक अबाउट इट, यानी कि हम अगर ह्यूमन बींग्स के बारे में सोचें या इवन अदर एनिमल्स, तो ऑक्सीजन इज ऑब्वियसली रिक्वायर्ड। आप बोलोगे ऑक्सीजन के बिना कैसे होगी रेस्पिरेशन, बट इट्स नॉट लाइक दैट। एक और टाइप की रेस्पिरेशन होती है विच हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और द लैक ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है, 1 minute I'll write here, एरोबिक रेस्पिरेशन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, it needs oxygen for the breakdown of glucose, okay, but anaerobic respiration can happen in the absence or lack of oxygen। तो इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा जो वो कंप्लीट, सॉरी पार्शियल नहीं, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन अच्छे से है इसके पास। सो दिस विल बी द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, whereas एनारोबिक में हमेशा पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा, ठीक है। तो अगर पार्शियल ब्रेकडाउन होने वाला है, सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि जो एनर्जी रिलीज है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलने वाली है हमको इस प्रोसेस से, that will obviously be more in aerobic respiration, but in anaerobic it will be less। इसमें कम एनर्जी रिलीज होगी। तो एरोबिक तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली वी ऑलरेडी नो, इट हैपेंस इन अस इन ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन एनारोबिक जो है, यार ह्यूमन बीइंग्स में भी समटाइम्स देयर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक में हम 2 जगह पढ़ेंगे, कहाँ पे? वन इज इन द मसल सेल्स इन ह्यूमंस, ठीक है, इवन इन आवर सेल्स, हमेशा तो यही होती है, लेकिन इन सम केसेस अगर ऑक्सीजन कम मिल रहा है बॉडी को, यानी कि व्हेन द फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, व्हेन यू रनिंग, साइकिलिंग, ये सब बहुत स्पोर्ट्स करते हैं, तो यू नो यू गेट टायर्ड एंड ऑल, तो मसल सेल्स में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है। दैट टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस इन द मसल सेल्स, एंड सेकेंड वी विल सी इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन फंगाई लाइक यीस्ट, ओके। एंड जब वो यीस्ट में यहाँ पे होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट पढ़ी है आपने,
that is nothing but the anaerobic respiration. Okay, so let's see, we will see in detail इसमें क्या बनने वाला है. Okay, so please remember these differences between anaerobic and aerobic respiration. So if we see aerobic respiration, aerobic में ऑक्सीजन की जरूरत है, तो this oxygen will be used up by the cell. and oxygen कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन आएगा ह्यूमन बींग्स में obviously through the air that we breathe in through the nose. Respiration in humans इसका एक separate topic मैं आपको कराऊंगी next session में. Okay, in detail respiration in humans पे. Today I'll just tell you generally about respiration in all organisms. Okay, so this oxygen is used up, लेकिन in anaerobic oxygen is not required, it's not present. and यहाँ पर yeast cell, yeast fungi, yeast में it is anaerobic respiration. Okay, so as I told you, aerobic में the energy release will be more and anaerobic में the energy which we receive will be less. अब ये एक बहुत important diagram है which sums up all the processes, all the types also of respiration and the products also which are formed. ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला टाइप देखो, ये जो फर्स्ट स्टेप है which I told you, where glucose is broken down to form this pyruvate which is a 3 carbon molecule. Where does this happen in the cell? This will take place in the cytoplasm of the cell. ये जो फर्स्ट स्टेप है glycolysis, this is common for all organisms and anaerobic हो या aerobic respiration. ये पहला स्टेप जो है glycolysis वो कॉमन है and it happens in the cytoplasm. ठीक है, अब इसके बाद after the pyruvate is formed, after that let's see what are the different pathways which can be followed for the breakdown of pyruvate. So first pathway which we are seeing is in the absence of oxygen, यानी कि ये हुआ anaerobic respiration which takes place where? In the cell of the yeast. So in this type of respiration, which is also known as what I told you, fermentation, here what are the products formed? Products formed अलग हैं than जो aerobic में होते हैं. यहाँ पे आपको याद रखना है इथेनॉल फॉर्म होगा along with carbon dioxide and energy. Okay, and ethanol is a 2 carbon molecule. Ethanol alcohol, when you study organic chemistry you will know C2H5OH होता है. It is a 2 carbon molecule. So इस pyruvate को break down करके, पहले 3 कार्बन था, अब ये और ब्रेक होके 2 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाएगा ethanol and burn carbon dioxide and energy is released. Okay, then what about the second pathway? Second pathway takes place when there is lack of oxygen. Oxygen की कमी कहाँ पे? In a muscle cells. जब हम बहुत ज़्यादा physical activity करते हैं, okay, then you know जो oxygen है in a body वो muscle cells तक उतना नहीं पहुँच पाता. So there is a lack of oxygen in our muscle cells. So in that case, this pyruvate will be broken down to form what products? Lactic acid and energy. Lactic acid is another organic acid and lactic acid is a 3 carbon molecule. So pyruvate 3 carbon है, lactic acid भी 3 carbon molecule है. तो इसकी location कहाँ है? In the muscle cells. And this is also a type of anaerobic respiration. And the third pathway which pyruvate can follow is obviously, yes, यहाँ पे एक important ये question भी आता है कि name the substance which causes cramps in our muscles when you work out a lot. तो muscle में cramp होते हैं, you know. So that is because muscles में anaerobic respiration की वजह से lactic acid form हो रहा है. This leads to the formation of cramps या even fatigue. It leads to fatigue, tiredness की जो feeling होती है वो भी lactic acid की वजह से होती है.
So this is the second type of anaerobic respiration. And now the third pathway is the presence of oxygen, and this is the aerobic respiration. Where does this take place? This takes place in the mitochondria of our cell. Mitochondria जब हम cell organelles पढ़ते हैं तो you already know mitochondria is known as a powerhouse of the cell or the energy currency of the cell, isn't it? Why? Because we know energy is produced here. Energy in which form? ATP. So that is made in the mitochondria. That's why you know कि ये aerobic respiration जो है वो यहीं पे होगी mitochondria में. And what are the products formed here? These you already know. Carbon dioxide, water and energy. This is a normal respiration equation which you have been studying always. So here, see, you can see an interesting fact here. Pyruvate is having how many carbon molecules? 3 carbon molecules. In yeast when this happens, then ethanol is formed जिसमें है 2 कार्बन and carbon dioxide is formed जिसमें है 1 कार्बन. तो टोटल कितने हो गए? 3 कार्बन हो गए. ठीक है. लैक्टिक एसिड इज अगेन अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. तो इसके साथ और कोई कार्बन मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है, तो ये 3 का 3 हो गया. और ये जो है एरोबिक, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, इसमें बस 1 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ना CO2 में, लेकिन ऐसे 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं. सो अगेन 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स. ओके, यानी 3 कार्बन डाइऑक्साइड के 3, 1 का 1, 3 के 3. सो यू कैन सी हियर द बैलेंस कार्बन मॉलिक्यूल्स का. ओके, ऐसे आप याद रख सकते हो. अगर कभी आप प्रोडक्ट भूल जाते हो कोई, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो. ठीक है. ओके, सो हियर इन दिस डायग्राम इटसेल्फ, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से ही बन जाएंगे. यू हैव टू रिमेम्बर. देखो, नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स याद रखने हैं आपको. पायरुवेट में, ग्लूकोज में, फिर एनारोबिक में, यीस्ट में ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है. मसल सेल्स में व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज द सब्सटेंस व्हिच कॉजेस क्रैम्प्स, एंड देन एरोबिक में क्या है. And also energy, amount of energy released is maximum in aerobic respiration. Okay, ये 38 molecules of ATP इसमें बनते हैं aerobic में. anaerobic में बहुत कम energy release होती है. So that was already the difference between aerobic and anaerobic. This I told you. Now, okay, तो इसमें energy बन गई है. So अब जैसे ही ये energy बन गई सेल में, what will the cell do with this energy? Can you tell me? So you know that what is the energy currency of the cell? We have already studied. Energy currency of the, my god, क्या हुआ? Yeah, energy currency of the cell होती है ATP, right? So जैसे ही सेल ने ये एनर्जी बना ली, तो the cell will use this energy to synthesize ATP. Okay, ADP से, so 1 phosphate molecule. So this energy will be utilized to form, so adenosine diphosphate को एक phosphate group और ऐड हो जाएगा, and adenosine triphosphate ATP molecule will be formed, which will be stored in the cells. जब भी एनर्जी चाहिए होगी तब इस ATP को वो एनर्जी के लिए रिलीज करेंगे. I mean this will be then broken down and energy will be released. ठीक है. सो ये एनर्जी जैसे रिलीज हुई, ये एनर्जी यूज कर ली और ATP बना लिया. एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया. एंड जब भी सेल को इस एनर्जी की जरूरत है, जब इसको रिलीज करनी है एनर्जी, तो ATP will be broken down and it will release energy, and this energy will be utilized in all the endothermic processes, endothermic reactions in the cell, जो भी जिसमें भी एनर्जी चाहिए. ठीक है. तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए था रेस्पिरेशन में? वी नीडेड एनर्जी.
तो एनर्जी हमें मिल गई एंड दैट टू इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एंड व्हेन दिस एटीपी विल ब्रेक डाउन, जब भी बॉडी को सेल्स विल यूज एनर्जी, दे विल ब्रेक डाउन दिस. जब वो टर्मिनल बॉन्ड भी टूट जाएगा फॉस्फेट का of the ATP linkage, then the energy is released. Okay, now let us see what happens in plants. Do you know how plants respire? Which gas do plants take in? तो gaseous exchange तो obviously होगा ही plants में, है ना. In the plants, how does this gaseous exchange take place? Yes. So in plants, you know, gaseous exchange will take place through the stomata. Yeah, आपने already पढ़ा है lower classes में stomata, which are the openings guarded by the guard cells. So stomata help in the diffusion of gases. By what process? If they ask you the process, you have to write by diffusion. Now respiration में ये sunlight है, ठीक है, daytime. Daytime में क्या होगा? During the day, what will the plants do? कौन सी गैस एक्सचेंज, कौन सा गैसेस एक्सचेंज होना है? तो प्लीज रिमेंबर, देखो डे टाइम में व्हाट डू मेनी स्टूडेंट्स टेल मी कि plants will take in carbon dioxide and they give out oxygen. That is how plants respire. But no, that's not respiration. No, that what you are speaking about is photosynthesis. Respiration in plants, it is the same as respiration in humans. वो भी ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ऐसा है तो व्हाई आर दे यूजफुल टू अस? हाउ डू दे, आई मीन ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ना प्लांट्स, दैट इज करेक्ट, पर वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है. सो डोंट मेक दिस, आई मीन अगर आपको ये मिसकंसेप्शन है तो लेट मी क्लियर इट. तो ड्यूरिंग द डे plants will undergo two types of processes जिसमें gaseous exchange होगा. One is obviously photosynthesis क्योंकि sunlight is available, and the second one is respiration. Both of them will happen. ठीक है. Now during photosynthesis, what do the plants do? They will take in carbon dioxide. So we are just speaking about the gases now. ठीक है. And they will release oxygen gas. And respiration में it is always same. They will take in oxygen and they will release CO2. But ये जो ऑक्सीजन प्लांट को चाहिए during the daytime, ये इसको अपने खुद से ही बन जाता है. फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज किया था उसका ही कुछ पार्ट वो यूटिलाइज कर लेता है अपनी रेस्पिरेशन के लिए, एंड द रिमेनिंग इज रिलीज टू द एनवायरनमेंट. ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस. सो व्हाट इज द नेट release? If you see the net gaseous exchange, if you see the main event लिख लेते हैं. Main event which takes place during the day is what? Main event will be release of oxygen. समझ में आ गया कि ये क्यों होगा ऐसे? Okay, I hope it's clear. Now if we speak about the, so please remember during the day the main event is release of oxygen because of this. Now let's talk about the night time when there is no sunlight. During the night time, photosynthesis will obviously not occur, but respiration occurs day and night. Respiration stop नहीं होती. So respiration तो चलेगी. Respiration में क्या लेगा plant? Oxygen लेगा and it will release carbon dioxide. So during the night, the main event happening with green plants is what? With plants is release of carbon dioxide. During night, this is the main event. Is it clear?
Okay, so that's what is happening with plants, and all this gaseous exchanges via the through the stomata, and stomata में intercellular spaces, the leaf के cells में intercellular spaces बहुत हैं, due to which the diffusion can happen easily. Okay, so we can see here during the day process of photosynthesis हुआ, but during the night photosynthesis नहीं होगा, oxygen लेगा plant और carbon dioxide release करेगा. That will be the main event during the night. And if you must have heard, that's why के रात में plant या plants झाड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये वो. हाँ, I mean there's nothing haunting in that. That is because of this, क्योंकि रात में तो वो CO2 ही release करते हैं, they don't release oxygen. Okay, so this is about the plants. Now what about the other type of animals other than human beings? Let's see that. Okay, it's here only. Yeah. Now in animals, different animals have different organs for respiration. Humans में क्या है वो तो हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट सेशन में. ओके, इन जनरल अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि ह्यूमंस यूज लंग्स, वैसे ही फिश जो है दे यूज गिल्स. अर्थवर्म जो है उसका तो ब्रीदिंग जो है ऑक्सीजन डिफ्यूजन, ऑक्सीजन एंड CO2 गैसियस डिफ्यूजन थ्रू स्किन होता है. नाउ you know one interesting fact about aquatic animals. See, aquatic animals जैसे फिश हैं, they also need oxygen for respiration. They want to take in oxygen, लेकिन you have to remember कि ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है दैट इज क्वाइट लेस कंपेयर टू ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. ओके, सो पानी में जो ऑक्सीजन है, द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन is less compared to the atmospheric oxygen. Because of this, what happens? What do we observe in aquatic animals like fishes? That is, कि इनका breathing rate is much faster. Aquatic animals, and this is again an important question. Why the breathing rate, or is the breathing rate faster or slower? First of all, you should know that. तो aquatic में breathing rate हमेशा ज्यादा होता है. ठीक है, मतलब number of breaths they take. Breathing, I hope you know what is breathing. देखो, breathing and respiration are slightly, they are different processes. Now you know exactly. Breathing is just inhalation and exhalation. Inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. Respiration is the oxidation or breakdown of glucose to release energy. Okay, so these are the different processes. Breathing is just a physical process, you can say, whereas respiration is a biochemical process. So breathing, now these breathing rate is faster in aquatic animals because oxygen जो पानी में है वो कम है, so they have to breathe a lot. Rate means per minute, for example, कितनी breaths लेते हैं. Okay, that is higher compared to humans because जितना ज्यादा वो inhale करेंगे उतना अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा उनको, क्योंकि पानी में already oxygen is low, and that's why it is breathing rate in aquatic organisms will always be faster. And what are the organs? What are the organs that they have for this breathing? Respiration में help करते हैं इनको. Like in humans there are lungs. Fishes में there are gills. If you must have seen कभी fish tank में अगर देखा है तो they will take in the water through the mouth, और फिर that water is forced through the gills. वाटर ही वो माउथ से, गैस तो नहीं ले सकते ना, लाइक अस, हम तो एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं, बट फिशेस जो है वो पानी लेते हैं थ्रू द माउथ, एंड देन दैट वाटर इज फोर्स्ड टू द गिल्स, एंड देन इन द गिल्स वो जो ऑक्सीजन है दैट विल एंटर द ब्लड वेसल से ब्लड में. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन aquatic animals and terrestrial animals में. And about plants also we have seen. How does this happen in humans? Respiration in humans.
एंड इसका हमारा पूरा जो प्रोसेस, जो पूरा सीक्वेंस है of inhalation of oxygen, and then what are the specialized organs we have in the lungs. And always remember one more thing, okay? Yeah, I'll show you here a little more. Like in terrestrial animals, they will take in the oxygen directly atmosphere से, atmospheric oxygen. And then the organs, when atmospheric oxygen has to enter, it enters via absorption by the organs, by the special organs. So those special organs must be delicate and thin, क्योंकि absorb करना है. They are delicate and thin, and they should have a high surface area, because you know absorption is always better when the surface area is higher. Therefore, these organs are inside the body. They are protected. They are well protected, and they are placed inside the body of animals. So, respiratory organs are present inside the body. Like in our body also, the lungs which are present, they are protected well by the rib cage, है ना, inside the body. So in humans, we will see the whole sequence of respiration, breathing, पहले how oxygen is taken in lungs, alveoli क्या है, then cartilage, trachea, all this we will see. That I'll show you in the next session, because थोड़ा सा उसको वो ज़्यादा importance हमको देना है और थोड़ा टाइम लगेगा, तो एक साथ हम करेंगे नेक्स्ट सेशन. ओके, सो आज जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पे हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट. So you can give your answers in the chat section. And this is the first question. Okay, so I'll read it out for you. During deficiency of oxygen in the tissues of human beings. Okay, let me tell you one more thing. मसल सेल्स में आपने पढ़ा है, मसल सेल्स ऑफ ह्यूमंस, हमारे मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, बट ये हमेशा नहीं होती, ठीक है. नॉर्मली इट इज ऑलवेज एरोबिक ओनली. इन ऑल द सेल्स इट्स एरोबिक. anaerobic will take place only in case of what, when there is high physical activity, बहुत वर्कआउट होता है, जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता तब. अदरवाइज मसल सेल्स में भी एरोबिक होता है. So please remember that. Okay, so this question is, during deficiency of oxygen in the tissues of human beings, pyruvic acid is converted into lactic acid in the dash. So these are the four options. A is cytoplasm, B is chloroplast, C is mitochondria, and D is Golgi body. So what is the correct answer here? Alan, hi Alan. तो देखो, अपना आंसर आप क्वेश्चन नंबर लिख के ऑप्शन नंबर लिख देना, ठीक है. तो क्लोरोप्लास्ट तो ऑब्वियसली नहीं होगा. क्लोरोप्लास्ट तो ह्यूमंस में नहीं होता, दैट इज इन ग्रीन प्लांट्स ओनली, आई मीन प्लांट्स में. माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस? ओनली एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी बिल्कुल नहीं होगा आंसर. यहाँ पे बोला है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी, व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन. अब बचे दो ऑप्शन, गोल्जी बॉडी या साइटोप्लाज्म. गोल्जी बॉडी का तो रेस्पिरेशन में कुछ काम है नहीं. साइटोप्लाज्म इज द आंसर, सो वन इज ए, साइटोप्लाज्म में. ओके, इसमें ग्लाइकोलाइसिस भी साइटोप्लाज्म में होता है, एंड सेकेंड स्टेप जो है ब्रेकिंग डाउन ऑफ पाइरुवेट, वो भी साइटोप्लाज्म में ही होगा, ठीक है. ओके, सो रिमेंबर दिस. नाउ आई विल शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है. You will have to read the question very carefully, okay, and then read the options also carefully so that you can give the right answer. Okay, so the first question, not the first, second question is, lack of oxygen in muscles often leads to cramps among
क्रिकेटर्स, आई मीन अमंग क्रिकेटर्स नहीं, वो तो किसी में भी होगा तो. सो क्रिकेटर्स लिखा है, सो यू नो इट्स अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज. So cramps in muscles, lack of oxygen. This results due to. So this I had clearly shown you today in the video, isn't it? Okay, let's see. The options are: A is conversion of pyruvate to ethanol. Second is pyruvate to glucose. Third is non-conversion of glucose to pyruvate. A non-conversion तो कुछ है नहीं. I mean, we can eliminate that. And fourth is conversion of pyruvate to lactic acid. So in the muscle cells, we know when there is a lack of oxygen, तब कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ग्लूकोज तो बनता नहीं क्योंकि वो एरोबिक में बन रहा है. इथेनॉल तो यीस्ट में बनता है. यस, दैट्स द राइट आंसर, लैक्टिक एसिड. तो क्वेश्चन 2 का आंसर है डी. लैक्टिक एसिड लीड्स टू क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर्स when there's lack of oxygen in the muscles. Yeah, let's see the third one. Okay. Yes, Alan, this time your answer was correct. Very good. Jagan, my God, आप osmosis में कहाँ पहुँच गए आज? Osmosis is a movement of water from high concentration to low concentration. जहाँ पे water molecules ज़्यादा हैं, वहां से वो जहां पे कम है उस तरफ मूव करेंगे थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस. ओके. यस अर्चना राणा, या दैट्स ट्रू. चलो, नो प्रॉब्लम. आई एम गोइंग टू रीड द थर्ड क्वेश्चन नाउ. प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस केयरफुली. क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट bracket S statement or statements is or are correct. Okay, first is pyruvate can be converted into ethanol and carbon dioxide by yeast. Second is fermentation takes place in aerobic bacteria. Third is fermentation takes place in mitochondria. And fourth, fermentation is a form of anaerobic respiration. So you have to select which of these statements are or is true. Okay, so what do you think? A में बोला है 1 and 3, B is 2 and 4, C is 1 and 4, D is 2 and 3. तो करेक्ट कौन सा सिलेक्ट करना है? जैसे हम करते हैं, I'll tell you which one is true, which one is false, and then you can see the correct option. First is pyruvate can be converted into ethanol and carbon dioxide by yeast. So we know that yeast undergoes anaerobic respiration. Anaerobic में और उसका products होते हैं ethanol and carbon dioxide. So this is correct. First statement is correct. Okay. Thank you, Alan. Thank you for the love from Kerala. Okay. So देखो, second option is fermentation takes place in aerobic bacteria. Aerobic में fermentation नहीं होता, anaerobic में होता है. Third is fermentation takes place in mitochondria. No, fermentation anaerobic में होता है, mitochondria में aerobic होती है respiration. Fermentation is a form of anaerobic. This is correct. So now you can choose out of A, B, C, D. Which option shows the correct statements? Yeah, so we can see here 1 and 4. These are correct. तो 1 and 4 कहाँ पे है? यहाँ पे. So question 3 का correct answer होगा option number C. Option number नहीं, option C. ठीक है? Okay, so let's move to the next question. Question number 4. Which of the following is most appropriate for aerobic respiration? 4 equations, 4 processes are given here. A is glucose, arrow, pyruvate. Arrow के ऊपर है mitochondria. तो ग्लूकोज कन्वर्टेड टू पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में होता ही नहीं है, तो फर्स्ट वाला तो ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि ग्लूकोज टू पाइरूवेट होता है साइटोप्लाज्म में, जो बाकी तीनों ऑप्शन में दिया है.
सो लेट्स सी अब ये तीनों में से कौन सा सही है. ग्लूकोज टू पायरुवेट इन द साइटोप्लाज्म, ये तीनों में सही है. Pyruvate gets converted in the mitochondria to CO2, water and energy. Yes, this is right. Because this is about aerobic. Here, pyruvate plus energy in mitochondria converts to CO2 and water. Energy तो दिखाई नहीं, इसमें energy तो होनी चाहिए. And here, sorry, ये फिर गलत होगा. क्योंकि glucose gives pyruvate plus energy and then that in the mitochondria gets converted to CO2 plus water plus energy. This will be the correct answer. Okay. Glucose converted to pyruvate plus energy in the cytoplasm and in the mitochondria gets converted to CO2 plus water plus energy. Okay, and let's see the next question. The correct sequence of anaerobic reactions in yeast. What will be the correct sequence for anaerobic reaction in yeast? यानी कि in absence of oxygen जो हो रहा है, the fermentation in short. So glucose converted to pyruvate and cytoplasm वो common होगा, वो तो चारों में दिया है, that's correct. After that anaerobic है तो mitochondria में नहीं होगा reaction. Reaction will not happen in the mitochondria. Reaction is in the cytoplasm itself. So out of B and D, which one will be the correct one? Lactic acid produce होगा yeast में या फिर ethanol and carbon dioxide होगा? Hi Manan and Ingela, hello. So lactic acid तो muscle cells में होता है. अभी अभी हमने देखा था ना, which causes cramps in the muscles for cricketers. Ethanol and carbon dioxide is correct. So question 5, and that's what happens in fermentation, you know ना. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फर्मेंटेशन में, उसकी वजह से तो राइस होता है, ब्रेड्स एंड ऑल. तो क्वेश्चन 5 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी. ओके, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और ये बहुत इजी वाला भी है. यस, वेरी इजी वन. नाउ दिस 6th क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर के पहले क्वेश्चन लिख दो प्लीज, सो आई कैन सी फॉर विच क्वेश्चन यू हैड गिवन द आंसर. ओके. When air is blown from the mouth into a test tube containing lime water, the lime water turned milky due to the presence of. यहाँ पे तो ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, I mean देखना तो पड़ेगा, but we already know the answer. Lime water turns milky. ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है. फॉर विच गैस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की? बिकॉज ऑफ वी नो कार्बन डाइऑक्साइड. सो यहां से बस देख लो कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे दिया है, एंड दैट्स द आंसर. सो 6 का आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड. यस इंजिला, वेरी गुड, दैट्स द राइट आंसर. सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर रेस्पिरेशन in general and respiration in human beings. ये पूरा टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. द नेक्स्ट सेशन वी विल सी इन आवर बॉडी व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स, जहाँ पे कैसे ऑक्सीजन जाता है, कैसे लंग्स उसमें क्या करते हैं, ब्लड में कैसे जाता है, ठीक है, एंड देन हाउ इट हैपेंस. दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. दैट विल बी थर्सडे सेम टाइम. टुमारो वी विल हैव a math class. Math session hoga same time, and there we will be continuing our chapter probability. Okay, so thank you for joining. I hope you enjoyed the video. So you can hit the like button and also share the video with your friends. And take care, and I'll see you in my next session. Bye bye.